My name is Danish Khan. I have been a Muslim all my life. I learned Arabic at the age of 6, and I first read the Quran at the age of 7. When I finished reading the Quran, my grandfather told me, the rules of being a good Muslim are laid out in this book, and all I have to do is to follow the path and reach Allah, my God. But over the last few years, I seem to have strayed. I am a Muslim who drinks socially, doesn't really care about halal and haram food, is in a relationship with a non-Muslim girl, among other things. But at the same time, I believe my iman is as strong as somebody who doesn't do what I do. I fear Allah and I pray to Him every day. For me, Islam is the way of life, rather than the rules and the regulation that govern it. Over the last few months, I have been mulling the idea of the good Muslim. Is there just one way to follow Islam? Am I a good Muslim? इस्लाम की तारीफ ये है कि इस्लाम का मतलब होता है अपनी ख्वाहिश के मुताबिक न चलने वाला। अरबी में मुस्लिम उस ऊँट को कहते हैं जिसकी नकील, जिसकी नात किसी और के हाथ में हो, उसको जिस तरफ ले जाया जाए उस तरफ चला जाए। अच्छे मुसलमान की ज़रूरी ये है कि हम हर तरह से जो है अल्लाह की हिदायत और रसूल की रहनुमाई के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। ईमान जो है इंसान को बेहयाई से रोकता है। जब तक आप बेहयाई से रुके हुए हैं तब तक समझिए कि आपके अंदर ईमान जिंदा है। I will say that I am a simple traditional Muslim. This is purely between Allah and me, and this is something spiritual, and I am to make this decision. If I want to live this way, then I do this way. Because I am a journalist and because I don't pray 5 times a day, people think I am an atheist. Because in Pakistan, either you're religious or you're an atheist. They're not in between. But actually, I am in between. I went to Germany to attend a course which was titled Islam in the West. One of the first people I'm talking to is my friend Hale, who is from Turkey, who I met in Germany. Hi Hale. Hello there, how are you? I'm good, how are you doing? I'm alright, thank you very much. Long time no see. Yes. You know, after coming back from Germany, after attending the summer school, I'm very curious about my religion. So I wanted to ask you, when you met other participants there in Germany, what thoughts went in your mind? My first observation was Islam was always together with the culture itself. Because in Turkey, I realized that the kind of Islam I have and I was brought up with, it was purely, it was absorbed in the Turkish culture itself. Whereas my friend from Pakistan, for example, their culture, the Pakistani culture was there. I mean, in the way they were dressing up, for example, I don't know, their understanding of Islam was really absorbed in culture. That was my first understanding. And also, I realized that there were people who were more conservative than me, and this made me question my own Islam. But then again, I came to this understanding that it's actually between Allah and me. Who am I to judge those people who are wearing jeans, for example, tight jeans for girls, or for boys for not praying 5 times a day? This is purely between Allah and me. Hale, I wanted to ask you, when you met me and when you interacted with me, and now you have formed a perception about me, according to you, what kind of a Muslim I am? Shall I be honest with you? Yes, please be honest. As I said, I mean, I am not in a position to judge anyone, but my impression of you was like a
a very liberal Muslim, I would say, someone who knows a lot about the Western culture again, Okay. and who tries to reconcile it with the religion, with Islam, and someone in between the Western and the Eastern worlds. Okay. I would call a very conservative man for you. Again, someone in between, but I can feel and see that you have this flavor of Islam, I mean this essence of Islam in you. I mean, in your looking at the world and in your approach to others. I felt that in you. If he didn't, in fact, to lessen pressure, Thiago's got through the left arm round the wicket, and he's bowling to Sharma. Sharma gets the ball on. I'm here at Jamia Millia Islamia to meet Islamic scholar Mr. Muhammad Adam, who is popular around the campus to help young minds. Let's have a word with him. इसको कहते हैं ना, अब दामन आप लोग अंदर कर लेते हैं। अस्सलाम आदम भाई, मैं एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ जिसका नाम है व्हाट्स रॉन्ग विथ माई इस्लाम, और मेरे पास आपके लिए कुछ सवाल हैं। आदम भाई, मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि हिंदू हैं, यहूदी हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, और मेरे मुसलमान दोस्त बहुत कम हैं। तो क्या मैं उनके साथ उठता बैठता हूँ, मेरी सोशल गैदरिंग वही है, तो क्या मैं कम मुसलमान हूँ मैं अपने मुसलमान भाइयों से कि जो अपने मुसलमान भाइयों के साथ उठते बैठते हैं? अल्लाह तबारक तआला ने कुरान में कहा है कि काफिरों से दोस्ती ना करो। वो एक तो ख़ास माने में है, अपने दिलों का हाल उनको ना बताओ, क्योंकि पहले ज़माने में ये होता था, या आज भी अगर कुछ जंगी मामलात चल रहे हों कहीं, तो वहाँ पर हुकूमत वक्त तो ऐसा ही करेगी। लेकिन आम ताल्लुकात में, आम रिश्तों में इंसान का सलूक अगर इंसान से इंसानों वाला नहीं है, तो अल्लाह तबारक ताला ऐसे लोगों को जालिम करार देता है। अल्लाह तबारक ताला ऐसे लोगों को, जो लोगों के साथ रहने की वजह से अपना आजमाते हैं या मानते हैं, लोग अच्छा कौन है बुरा कौन है अल्लाह के यहाँ, वो इससे साबित होगा कि आप अपने किरदार में, अपने अमल में, अपनी इबादतों में कैसे, अपने मामलात में कैसे। तो आप कह रहे हैं कि वो वहाँ साबित होगा, यहाँ मुझे पता नहीं है कि मैं अच्छा मुसलमान हूँ या नहीं है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैं कह रहा हूँ कि आप बेहतरीन मुसलमान हैं अगर आप एक गैर मुस्लिमों के साथ रह करके आप उनके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, उनके साथ प्यार का मामला करते हैं, उनसे नफ़रत नहीं करते या किसी किस्म का, चूँकि इस्लाम नफ़रत नहीं सिखलाता। कि आप 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं, मैं 5 वक्त नमाज़ नहीं पढ़ता हूँ, आप दाढ़ी रखते हैं, मैं दाढ़ी नहीं रखता हूँ, हम दोनों में से बेहतर मुसलमान कौन है? वह अच्छा सवाल है। सबसे पहली बात तो ये है कि मेरी दाढ़ी गैर इस्लामी है, ये वजाहत कर दूँ। दाढ़ी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिना कटी हुई रखी और मूंछ को पस्त करने के लिए कहा, क्योंकि मूंछ एक तकब्बुर की अलामत थी, आपने उसको ख़त्म कर दिया। दाढ़ी आप जानते हैं कि दाढ़ी शेव करने से आपका जो कई चीज़ें ख़त्म होती हैं, जिससे चौथी पाँचवीं नस्ल में बहुत से नामर्दी बढ़ती है, नामर्द पैदा होते हैं, और मर्दों की जो ताकत है वो भी कमज़ोर होती है। और दुनिया में जितने भी बड़े लोग आए वो सब दाढ़ी वाले थे। नमाज अल्लाह से ताल्लुक़ का मामला है, तो हो सकता है मैं नमाज में आपसे अच्छा हो सकता हूँ, लेकिन हो सकता है कि मामलात में आप मुझसे अच्छे हों। अल्लाह के नज़दीक कौन सबसे अच्छा है ये मैं नहीं जानता। अलबत्ता इस्लाम के साथ चंद चीज़ों की जो शर्त अल्लाह ने रखी है एक मुसलमान को करना चाहिए। ज़रूरी है कि हम अल्लाह से कांटेक्ट रखने के लिए नमाज़ी पढ़ें? आपको मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिना नमाज पढ़े भी अपने खुदा से उतना करीब हो सकता हूँ जितना एक इंसान नमाज पढ़ के खुदा से करीब हो सकता है। यही असल सवाल है, आपके पूरे डॉक्यूमेंट्री का असल सवाल यही है कि मैं जो खुद सोच रहा हूँ वो सही है या जो मेरे लिए कानून बनाया गया है वो सही है। सारी दुनिया में जो फितना है, जो लड़ाई और झगड़ा है, वो यहीं से शुरू होता है कि हर शख्स अपनी मर्ज़ी से चलना चाहता है। गलत क्या है इसमें? गलत ये है कि जब हर मामले में अपनी मर्ज़ी चलाएंगे तो फिर कानून का कोई भी इदारा एक फंक्शन नहीं कर सकता, और समाज में किसी कानून को फंक्शन करने के लिए ज़रूरी है कि कुछ मामलात में जो आपको मुकल्लफ बनाया जाए उसको आप करें। I'm here to meet two Pakistani journalists, Mr. Yusufzai and Kamal Siddiqui, who are in town, and ask them a few questions about my documentary, What's Wrong with My Islam, and to find out if the age has given them any perspective. But in India, Islam, and anyways in all over the world, is very sensitive. And you know, this one particular muezzin or imam or somebody who has hifz the Quran tries to enforce his interpretation of Quran on other, and particularly if you're doing
for example, if I'm wearing a perfume which has alcohol content, Yes. and my pants is obviously below my ankle, Yes. so does that make me less Muslim than somebody who is wearing a pajama above his ankle and wearing Yes. wearing a itar? Does that make me less Muslim? You see, this is a very good question that you ask, because in my belief is that, like, we are educated people, we can question a lot of things. There are certain things we have to take for granted, like there's no way to prove or disprove them. But there are certain logics to things that we do in our religion, and we should always question. We should, first of all, ours is not a religion whereby you decide, for example, everything that your imam tells you. That's one. Then at the same time, while we have developed in terms of our education and our intellect, our clergy has not developed alongside. So in many instances, that is why you see that a lot of things that they say don't make sense. You mentioned that you used to pray initially when you were young, and you started praying at a certain age. What made you do that? Even your parents allow you some liberty. So my parents were not that strict. And also maybe I was not living in the village all the time with my parents. So I was on my own, studying in Peshawar, then moving on to Lahore, Karachi, Islamabad. So that was maybe the reason I could take liberties. But why I started praying 5 times, I think in midlife and in later life, this is what happens. Although I was praying much earlier, but after, say, maybe there were 2 reasons. One was I had a heart attack in 2001. After that, I became more religious. And before that, in 97, I performed Hajj. Throughout your life, did you have these questions which I'm asking you now? Did it struck to you at any point in time? Yes, definitely. I was also very, I think when I was your age, I was very, I was a, let's say, very intolerant person. And I would say, no, this is not right, this is right, Muslims are like this. But then I realized that Islam is much bigger than that. It's not about rules and do's and don'ts, and it's much bigger. And there are different schools of thought in Islam whereby different people say this is what we feel, but you have to respect them. And now I've seen in Pakistan how things are in terms of how Muslims are killing Muslims. And Pakistan, it is very sad to say that Pakistan is possibly the only country or one of the few countries in the world where you are checked before you go into a mosque. Sharma gets the ball that keeps him honest on the middle and leg stump, slightly short of a length, and of course on the back foot and plays the way down to extra cover. And in all the excitement of Rohit Sharma getting it. I'm here to meet a Muslim friend's family and ask them what a modern family thinks about Islam. अस्सलाम वालेकुम। सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। जी जी बिल्कुल, सब दुआ है। आइए बैठिए। जी। काफ़ी इंतज़ार कराया आपने? जी ट्रैफिक में फंस गए थे। तो मैं एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ जिसका नाम है व्हाट्स रॉन्ग विथ माई इस्लाम। मैं इस डॉक्यूमेंट्री के दौरान बहुत तरीके के लोगों से मिल रहा हूँ और उनसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि जो मेरा मज़हब है उसे जिस तरीके से मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ क्या वो सही नहीं है, या फिर मुझे जो कुरान और हदीस में जो लिखा हुआ है वैसे ही फॉलो करना चाहिए। आप नकाब नहीं पहनती हैं, तो क्या वजह है आप ऐसा सोच के आप नहीं पहनती हैं? वजह तो कोई ऐसी ख़ास नहीं है, बस एक मेरी पर्सनली जो मुझे वजह नज़र आती है थोड़ी सी, तो वो मौसम की नज़र आती है, बाकी और कुछ नहीं है। क्योंकि जब हम दुबई में रहे, हमने प्रॉपर अबाया पहना, प्रॉपर हिजाब किया, सब कुछ किया, तो वहाँ एक ये सहूलियत नज़र आती है कि आपको एक तो माहौल तो चलो अपने बनाने से, अपनी सोच से बनता है, लेकिन एक किसी भी चीज़ को करने में जो सहूलियत आपको मुहैया हो रही है, तो वो हमारे मुल्क में या हमारे जिस शहर में हम रह रहे हैं हमें वो सहूलियत नहीं मिलती है। तो अब
एक अबाया जो हम एसी में रहकर या मॉल और एसी एनवायरनमेंट वाले जगहों में आराम से पहन सकते हैं, वो हम यहाँ जो है दिल्ली में नहीं पहन पाते हैं. There's a big difference between Muslims in India and Muslims in other countries. ठीक है, तो इंडिया में जैसे फॉलो होता है, I don't like that. इंडिया में people have a really closed mind और ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही फॉलो करो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, ये ऐसे कहते हैं, ये फतवा है, I don't really know what the definition for that is, but then seriously ये ऐसे कहते हैं, इसमें ऐसे लिखा है, कुरान में ये लिखा है, कुरान में तो ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं. और बाहर इतना, even I saw a woman once, you know, in a mosque in Dubai, she was wearing a backless dress, and then she came to the mosque, wore a dupatta, and then offered namaz. I felt so good after seeing her. मतलब अगर मुसलमान है, ऐसे भी तो मुसलमान होते हैं, सिर्फ वो थोड़ी जो बस बुर्खा पहन लिया हो गया. तो उस ऐसे एग्जाम्पल से मुझे लगता है कि faith is more important. और personally भी I feel the same. कि बच्चे जिस तरह हैं, एक माँ के हिसाब से और एक ऐसे भी एक इंसान के हिसाब से कितने मुसलमान हैं, अगर आपको तौलना आप चाहें तो कितने मुसलमान और कितने मुसलमान नहीं हैं, अगर आप इस चीज़ को बताना चाहें? अगर सिर्फ मुसलमान की डेफिनेशन से देखा जाए तो मैं तो मेरे ख्याल से बस वो 1 या 2%. अच्छा. क्योंकि मुसलमान होने का जो पैमाना है ना वो बहुत हाई है. तो हाँ, और अगर इंसान होने के नाते से अगर पूछे जाए कि एक इंसान कैसे है, तो वो उनकी परसेंटेज बहुत हाई है जी. तो मेरे ख्याल से मुसलमान तो शायद मैं भी, अगर उस पैमाने से कोई मुझे देखे तो मुझे भी कहे कि ये तो मुसलमान ही नहीं है, कभी कैसे कभी कैसे. पीठ पीछे मेरी भी बहुत सारी बातें होती होंगी, लेकिन मैं अपने मुसलमान होने से मुतमईन हूँ. I'm going to meet my grandfather, who has played a crucial role in raising me up, and I'm going to pose the questions which I'm asking in the documentary to him as well. उस जगह मैदान पर पश्चिमी सिरे पर, जहाँ की केवल एक सिंगल स्टोरी दर्शक दीर्घा है, एक मात्र एक मंजिली, वो उसके ऊपर अगर कंस्ट्रक्शन हो तो रोशनी आ ही नहीं सकती, फिर चली नहीं सकती. तो नाना, मैं एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ जिसका मकसद ये है कि जो मैं इस्लाम फॉलो कर रहा हूँ अपने हिसाब से, और मैं लोगों से सवाल पूछ रहा हूँ कि अपने हिसाब से जो फॉलो कर रहा हूँ तो उसमें क्या सही है वो या गलत है. जो तरीका बताया गया है वैसे ही फॉलो करना चाहिए, मैं अपने तरीके से फॉलो कर सकता हूँ. इसी बात पे मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहा था, तो सोचा कि बाहर में हम थोड़ा सा वक्त बिताते और इस पर बात करते. नाना, मेरा आपसे ये सवाल है कि आपके नज़र में एक अच्छा मुसलमान कौन है? अच्छा मुसलमान वो है जो इस्लाम के मुताबिक पूरी तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजारे. इस्लाम एक वे ऑफ लाइफ है, और उस वे ऑफ लाइफ जो है ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका है. तो उस तरीके के मुताबिक अगर हम ज़िंदगी गुजारते हैं तो अच्छे मुसलमान के लिए सब चीज़ ज़रूरी है. फ़राइज़ जो हैं उसको पूरा करना ज़रूरी है, जैसे हम नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, लेकिन उससे पहले ईमान ज़रूरी है. आपने मुझे बचपन से बड़े होते देखा, आपने मुझे बड़ा किया है, और आप चाहते होंगे कि मैं एक ऐसा मुसलमान बनूं, दीनी बनूं. आपने कुरान पढ़वाया, दीन की तालीम दी, तो आप आज मुझे देखते हैं तो क्या आपको लगता है कि मैं एक अच्छा मुसलमान बन पाया हूँ? नहीं, अच्छा मुसलमान तो खैर हम नहीं कह सकते हैं. ईमानदारी की बात यह है, अच्छा मुसलमान होने के लिए एक तो ये है कि जो फ़राइज़ हैं उसको पूरा करना ज़रूरी है, और दूसरा ये कि इस्लाम के मुताबिक अगर हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं. इस्लाम में क्या है, एक बता दिया गया है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है. अगर हम इस्लाम के मुताबिक कोई काम कर रहे हैं तो सही है, अगर इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई काम कर रहे हैं तो वो गलत है. इंसान से कई बार गलती हो जाती है, जैसे आपने बात की जो चीज़ हराम है इस्लाम में, जैसे कि शराब पीना हराम है, अगर माना किसी ने पी लिया तो फिर वो क्या करे, वो फिर वैसा मुसलमान बन सकता है? बन सकता है. तो उसके लिए क्या? अल्लाह ताला ने कहा है कि हर चीज़ के लिए तौबा है, बल्कि तौबा अल्लाह को बहुत पसंद है. ये भी आया है कि इंसान अगर पहाड़ के बराबर गुनाह करे और अल्लाह से दिल से तौबा करे
तो अल्लाह ताला उसे माफ़ कर देता है। और तौबा अल्लाह को इतना पसंद है कि अगर कोई कौम तौबा करना छोड़ दे, तो गुनाह करना छोड़ दे, तो अल्लाह दूसरे कौम को मुसल्लत कर देगी कि ताकि वो गुनाह भी करे और तौबा भी करे। यह है इस्लाम के असल खूबी। और अगर खुदा न खास्ते गलतियाँ अगर मुझसे हो जाएं तो क्या आप मुझे माफ़ कर देंगे? माफ़ इस शर्त पर करेंगे कि जो है फिर आइंदा इसको नहीं दोहराएंगे। जो गलती को अल्लाह माफ़ कर सकता है उसको हम भी कर देंगे। So who is a good Muslim? I never really expected a concrete answer. But through this film, I realized something. I realized a small group tried to define religion and group it under a narrow category. I believe that every one of the 1.6 billion Muslims of the world follows Islam differently, and that there is no one perfect way. I think it's important for young people like me to question their religion and find their own answers. I have made peace with myself. I get on with my life just like everybody else, with Allah in my heart and my morals in place. My practice may change with time and age, but my faith is constant. People may question my Islam. I say, there is nothing wrong with my Islam. Go and find yours.